Hi guys and welcome to MotorBeam. Welcome to this धमाकेदार comparison of these 5 mid-size compact SUVs. Today we are going to pit the new Hyundai Creta to the Honda Elevate, the Volkswagen Taigun, the Toyota Urban Cruiser Hyryder and the Kia Seltos facelift. Time to discuss the engine specs. First start करेंगे Hyundai Creta facelift के साथ because this is the newest car on the block right here. This particular car is the 1.5 turbo DCT variant, the top end variant. Creta में आपको 3 engine options मिल जाते हैं. 1.5 turbo makes 160 PS, 253 Newton meters, comes with a 7-speed DCT. N line अगर आपने ली तो उसमें आपको मैनुअल मिल जाता है. 1.5 NA gets a 115 PS engine making 144 Newton meters of torque. उसमें आपको IVT या फिर मैनुअल मिल जाता है. And a 1.5 liter diesel engine making 115 PS and 260 Newton meters. उसमें आपको 6 speed manual या 6 speed torque converter मिल जाता है. And coming to the second car, we have the Toyota Urban Cruiser Hyryder. ये वाली गाड़ी hybrid है, which comes with an eCVT and not a manual. This one makes 115.56 PS of power and the engine makes 141 Newton meters of torque. मोटर से आपको additional 122 Newton meters का torque मिल जाता है. इसमें आपको normal petrol engine भी मिल जाता है mild hybrid tech के साथ. That one makes less 103 horsepower and 136.8 Newton meters of torque. 5-speed manual या 6-speed torque converters को मिल जाता है. This and of course the Grand Vitara are the only cars in the segment to get all-wheel drive. Coming to the third car, the only German car over here. Of course, the specs for this and the Skoda Kushaq are exactly the same. गाड़ी अभी more or less similar ही है. And यहाँ पे we have the 1.5 liter TSI DSG variant, 150 horsepower, 250 Newton meters. इसमें आपको 6-speed manual भी मिल जाता है. And the lower engine is a 1 liter 3-cylinder engine making 115 PS and 178 Newton meters. That gets a 6-speed manual or a 6-speed torque converter. Coming to the fourth car today, and we have the 1.5 IV Tech CVT variant of the Elevate. This one makes 121 PS of power, 145 Newton meters of torque. CVT मिल जाता है, 6-speed manual भी मिल जाता है, and no turbo engine on the Elevate. And now we have the Kia Seltos, similar specs as the Hyundai Creta. तो इसमें आपको सेम इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिमिलर गियरबॉक्स ऑप्शंस मिल जाते हैं. Kia Seltos में आपको IMT भी मिल जाता है, which is not offered on the Hyundai Creta, but more or less the mechanicals are the same. We saw the 0 to 100 timings of all of these compact SUVs. Now it is time to check the braking performance. देखते हैं कौन सी गाड़ी के brakes में कितना है दम. Time for a braking test with the Taigun first. 70 पे लेके जाएंगे गाड़ी को. And I'll stand on the brake pedal. Taigun की ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. Taigun and Elevate have drum brakes at the rear. बाकी सब में पीछे disc brakes आपको मिल जाती है. So I'll take the Elevate to 70 kilometers an hour. You can hear the CVT screaming. Nice braking. In fact, stronger than that of the Taigun. गाड़ी काफी जल्दी रुक गई, but the car moved around a little. And now it is time for a braking test with the Hyryder. गाड़ी को 70 पे लेके जाएंगे. स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. टायर्स काफ़ी स्क्रीच हुए बट गाड़ी बहुत जल्दी रुक गई.
And now it is time for a braking test with the Creta. इसमें भी पीछे डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती है. Let's see how it is. I am really impressed by the Hyryder's braking. तो देखते हैं इसका कैसा है. A little longer stopping distance compared to the Hyryder, but good. And finally, time to check out the braking of the Kia Seltos. Take the car to 70. Similar to Hyundai Creta, the stopping performance. It is now time for the Ingress Egress test. देखते कौन सी गाड़ी ज़्यादा comfortable है, कौन सी ज़्यादा uncomfortable है. And we'll start off with the Hyundai Creta facelift. Starting off with the driver's seat of the Hyundai Creta. Door opens wide, almost 90 degrees, and very easy to get inside. Driving position काफ़ी low है इसकी, and even the instrument cluster is a little lower. पीछे बैठ जाते हैं इसमें. Space is not all that great, but decent है segment के हिसाब से. And not very difficult to get in and out of the Creta. I think काफ़ी अच्छा था. अभी देखते हैं Hyryder. Hyryder driver seat से start करते हैं. Door is very light compared to other cars. And I am seating here. Nice. I like this driving position. काफ़ी easy है गाड़ी से निकलना भी. And rear seat should be interesting over here. Seems a little cramped compared to the Hyundai Creta. Creta में थोड़ी space ज़्यादा थी. And now we'll try the Volkswagen Taigun. Taigun driver seat से start करते हैं. The seating position is much lower than the Creta and the Hyryder. In fact, even with the Kushaq, काफ़ी low seating position आपको मिल जाती है. पीछे देखते हैं. The Taigun also looks the smallest in the segment. Space is actually decent. Getting in and out is also easier than the urban cruiser Hyryder. अब देखते हैं Honda Elevate. Elevate driver side door. This is actually heavier than the door of the Hyryder. In fact, Taigun जितना almost weight इसमें आपको मिल जाता है. With Honda, I think Ingress Egress are always sorted. काफ़ी comfortable है गाड़ी. And with the rear door also, let's see. Extremely easy to get in and out of the Elevate also. I think Elevate and Taigun were the easiest till now. Seltos देखते हैं अभी. Seltos driver door again opens as wide as that of the Hyundai Creta. Seating position is a little higher compared to the Taigun, almost Creta level की. And I like the seating position. पीछे की सीट देखते हैं. You sit a little upright over here. Under thigh support थोड़ा कम है यहाँ पे, and getting out is easy. So I think Ingress Egress are quite sorted on most of these cars. Time for the rear seat test with the Kia Seltos first. उसको बंद कर देते हैं, and I am comfortable. Enough space at the top for the head. Leg room is decent. What do you guys think? Good. For our size, actually, it's spacious only. Okay. The headrest is nice. Legroom तो enough है. Legroom अच्छा है. 3 adjustable headrests मिल जाते हैं, which is a good thing. It's hard though. Yeah, but the Creta does not have a headrest for the middle passenger. Surprisingly, यहाँ पे light है, वहाँ पे भी light है. This sunshade feels nice. Protects you from the sun. Overall, positive. Yes. Yep. चलो next car. Time for the rear seat test with the Taigun this time. Seems a little smaller than the Seltos, ना? थोड़ा shoulder space limited हो रहा है. 3 adjustable headrests, good thing. Upholstery is okayish. Fabric और leather का mix है. उसमें leather था, ज़्यादा premium था. You get 2 lights over here. यहाँ पे light नहीं है, sunshade नहीं है. And yeah, what do you guys think? Knee room अच्छा है. Knee room अच्छा लगा? थोड़ा low लग रहा है बैठा हुआ compared to Seltos. Seats are low. Also the headrest here is bigger and softer than the Seltos. You liked it more? Better. Okay. Yeah. चलो next car. Time for the rear seat test with the Honda Elevate. Headroom is decent. Knee room अच्छा है काफी इसमें, and 3 people are comfortable. What do you guys think? Yep. It's very comfortable. It doesn't have a headrest and No headrest for the middle passenger. and just a 2-point seat belt. For the middle passenger, yeah, 3-point seat belt missing है यहाँ पे.
नो पैनोरामिक सनरूफ, छोटा सा सनरूफ है, सिंगल लाइट ओवर, नो सनशेड्स, क्वालिटी डिसेंट है, सीट अपहोल्स्ट्री भी अच्छी है लेदर की. बहुत स्पेशियस है. It looks premium because of the brown leather. या लुक्स नाइस. चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी हाईराइडर में. टाइम फॉर द रियर सीट टेस्ट विद द अर्बन क्रूजर हाईराइडर. यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे लाइट है, बिग सनरूफ, हेडरूम इज अ लिटिल लिमिटेड, माय हेड इज हिटिंग हियर. कैसा लगा बताओ? अच्छा कुशनिंग है. सॉफ्ट है ना सीट इसकी, अंडर थाई सपोर्ट लैकिंग है, लेकिन ये जो बेस है सीट का वो काफी छोटा है कंपेयर टू थोड़ा दोस्त क्रैम्प लग रहा है भी है. हाँ, एंड क्वालिटी ओके है ये सब चीज़ों की, कुड बी बेटर. कंपेयर टू होंडा या बट यू गेट 3 एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाता है जो पीछे से आता है वहाँ से बूट से, एंड ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट आई थिंक डिसेंट एक्सपीरियंस. सनशेड्स होते, थोड़ी यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी इंप्रूव होती तो और मजा आता. एंड नाउ फाइनली द क्रेटा. टाइम फॉर द रियर सीट टेस्ट विद द Hyundai Creta. वेरी लाइट कलर थीम हो, लुक्स एंड फील्स एरी, बड़ा सनरूफ यहाँ तक पीछे तक आ जाता है. एंड बताओ कैसा लगा? बहुत स्पेशियस लग रहा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कार्स. Spacious and very premium looking also. हाँ, आई थिंक सेल्टॉस क्रेटा दोनों में बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड दिस इज गुड. There's no headrest. अनफॉर्चुनेटली नो हेडरेस्ट फॉर द मिडिल पैसेंजर. आई थिंक ये देना चाहिए था बिकॉज सेल्टॉस में आता है तो इसमें क्यों नहीं. एंड इफ यू बाय द क्रेटा इन लाइन तो आपको ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है विथ रेड इंसर्ट्स, बट दिस ऑल्सो लुक्स गुड. खाली ये थोड़ा गंदा हो सकता है जल्दी. एनीथिंग एल्स यू गाइस विश टू ऐड? No, this headrest is same as Seltos. Similar to Seltos, no? Yeah. Okay, chalo, done. We are done with the rear seat test. Time to compare the boot spaces of all of these cars. We'll start off with the Hyryder because इसमें सबसे छोटी boot मिल जाती है because of the hybrid battery, 265 liters only. यहाँ पे आपको shelf मिल जाता है, उसके नीचे थोड़ी जगह मिल जाती है, 2-3 लैपटॉप बैग आ जाएगी. And the spare wheel is placed below the bumper only on this car in the entire segment. Of course, the Grand Vitara also. And ये जो इसका tail gate है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाता. So if you are very tall ना, यहाँ पे ऐसे सर में लगने का चांस है. So you have to be careful. And now we'll come to the Volkswagen Taigun. This has a decent boot space of 385 liters, 60-40 split function. सभी गाड़ी में मिल जाता है इस सेगमेंट में. इसका जो बूट का एरिया है, लोडिंग लिप, दिस इज अ लिटिल हाई और लगेज एरिया थोड़ा नीचे हो जाता है. एंड यार स्पेस इज डिसेंट, सेम एज द Skoda Kushaq. एंड नाउ आई विल कम टू द Kia Seltos. 433 liters of capacity. यहाँ पे पूरा फ्लैट एरिया आपको मिल जाता है. This opens up for the spare wheel, 60-40 split function. There's a light over there on the left and the boot space is decent. ये भी थोड़ा ऊपर खुल जाता है, so height का वैसे कोई issue आएगा नहीं. I'm 6 feet tall and there's still enough space above me. And now I'll come to the Honda Elevate. इसमें आपको biggest boot in the segment मिल जाती है, 458 liters की. The loading lip is a little high, but Taigun में ज़्यादा ऊपर था तो वो थोड़ा inconvenient हो जाता है. This has a very big boot, 60-40 split function आपको यहाँ पे मिल जाता है. ये यहाँ पे लग जाता है. This does not go very ज़्यादा ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पे लगने का चांस है. And now I'll come to the last boot, the Hyundai Creta, of course, 433 liters, same as the Kia Seltos. Flat आपको यहाँ पे मिल जाता है एरिया, सबवूफर साइड में, but it does not eat into the luggage space. And this opens up to reveal the spare wheel. इसमें ये पूरा खुलता है, Seltos में हाफ खुल जाता है. And this also opens up, big enough. तो यहाँ पे भी हाइट का कोई इश्यू आता नहीं है. And now it is time for a bottle holder test with these 5 compact SUVs. देखते हैं कौन सी गाड़ी में कितनी ज़्यादा 1 लीटर बॉटल्स फिट आती है.
And now it is time to compare the horns of all of these cars. Start करेंगे Honda Elevate से. Same horn you used to get on the Honda Brio, Amaze, 3rd generation City, 4th generation City, सब में same horn आता है. It's decent. Seltos का सुनते हैं. Very nice horn, premium है लेकिन बहुत irritating है, बहुत ज़्यादा loud है. Coming to the Taigun. German gun with a Japanese sounding horn. I think the older Volkswagens, even the new Taigun, the horn which you get on those cars, I think वो वाला इसमें देना चाहिए था. Would have felt a little more premium. And coming to the Creta, most famous horn in the segment. Nice horn, but again very loud. तो कान में थोड़ा irritate होता है इससे भी. And now Hyryder. This horn is not very loud and it is shared with a lot of other Maruti cars. तो Swift, Celerio, Baleno, Grand Vitara, Jimny ये सब में भी ये same horn आपको मिल जाता है. Glanza में भी same horn आता है. It is now time to put all of these cars through a bad road test. देखते हैं किसकी ride quality कैसी है. Time for the bad road test. सबसे पहले Kia Seltos this time 18-inch tires इसमें मिल जाते हैं. Ride is comfortable वैसे but थोड़ा firm edge भी है. Yes. Glad that he's not given me a bottle to drink because मेरे को गीला नहीं होना है वापस. However, इसमें नहीं होता इतना. ठीक है, right? It is manageable actually. We are on a really bad patch right now. Yes. इतना बुरा है नहीं वैसे. है ना? थोड़ा firmness feel हो रहा है ना? The stiffness is felt over here, and I think with the 18-inch tires, the cost of replacing the tires will be very high compared to the other cars. इसमें 17-inch के tires आपको मिल जाते हैं. Correct. So these tires are actually very expensive. And even the Creta N-Line has those. But यहाँ पे if you are trying over stones, थोड़ा मतलब body movement इसमें feel हो रहा है ना गाड़ी के अंदर. Yes, and we have to be careful also थोड़ा सा. Yeah, we don't want to damage any of the tires. So anyway, next कौन सी गाड़ी में करें? Creta? Creta करते हैं चलो. Time for the bad road test with the Creta now. 17-inch tires. And you instantly feel the difference, na? Yes, immediately. There's so much comfort. There's body movement, yes. Similar body movement. But थोड़ा soft भी feel हो रहा है ना, right? हाँ. It is not hitting as bad. And these tires also a lot cheaper when it comes to replacing them. N-line में आते लेकिन 18-inch के. अभी वही है, it's up to people's choice. हाँ. But still, if you want comfort, like comfort is here. Comfort मस्त है इसमें. हाँ. Either of the Koreans looking for comfort, Seltos is a little harder. This is comparatively softer. But Seltos में भी अगर comfort चाहिए, get the lower variants, the mid variants, उसमें आते हैं 17-inch के tires. Correct. So the ride will be better on those. Next कौन सी गाड़ी में करें? Honda? Elevate, yes. Time for the bad road test with the Honda Elevate now. One of the better riding cars in the segment. Honda. अरे. But नहीं अच्छी है, comfortable है. Actually, instead of the sideways movement, the ride quality is actually very nice. I would actually go ahead and say कि थोड़ा Creta से भी ऐसा. Creta से ज़्यादा comfortable है इसकी ride. Plus the seat में ना it's supporting me much better. Yeah, the seat is nice. Front seats are very good. And मतलब जो लोग family के साथ travel करते हैं या oldies के साथ travel करते हैं, they want more comfort. Yes. And less of the fancy stuff. Probably the Elevate will appeal to them a lot more. जैसे City ज़्यादा appeal होती है compared to its rivals in terms of comfort. Correct. So यहाँ पे भले segment champion कोई और है लेकिन comfort wise तो है ये. Comfort तो मस्त है इसका, very nice comfort. Yes. Next, Hyryder. चलो. Bad road test with the Hyryder hybrid now. Toyota. ये भी comfortable तो है वैसे, थोड़ी firm है because of the hybrid, but still it is not very bad as such. Yes. So the ride quality is actually very confusing right now. क्योंकि यहाँ पे वो same, like not to say this, but वो same Maruti Toyota वाला feel आ रहा है. तो seat wise है ना वो softness है. Yes, but I like the ride. Stiff है definitely, जो normal petrol या all wheel drive आता है उसमें थोड़ा अलग होता है ride quality. The hybrid has a stiffer suspension. Correct. But it is not bad as such. खाली वो है कि मतलब जो plushness होती है, that is somewhat missing. Something that you get on the Elevate. Yes, true. What's up next? Next we have the Taigun finally. The most fun car in the segment. Yeah, definitely. Let's see if it's comfortable too. Yeah. And now bad road test with the Taigun. And the first thing I noticed, I'm sitting very, very low. हाँ, बहुत low है इसकी seating position. The car also feels a little small, yes. But I'm very familiar because last year I had the Taigun for 6 months. बहुत मजा आया था गाड़ी के साथ. GT, the TSI DSG of course. Correct. मस्ती. But इसमें the ride is actually quite hard. Hard है but हाँ मतलब smoothly जा रही भी है गाड़ी. हाँ, but there are some things like छोटा bumps है ना वो बहुत feel होता है वो सब. वो translate कर रहा है पूरा. हाँ, but as far as the high speed stability goes, I think the Taigun and the Kushaq have the best of that. हाँ.
तो जो कॉर्नरिंग करने में मजा आता है, हाईवे पे थोड़ा मतलब फास्ट चलाने में मजा आता है, वो टाइगन और कुशाक में सबसे ज्यादा आता है। ड्राइविंग फील में आई थिंक दीस टू कार्स आर अनबीटेबल इन दिस सेगमेंट। क्रेटा एंड सेल्टोस आर गुड, नो डाउट, अमेजिंग कार्स, बट जो ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट होती है वो उसमें नहीं है। ट्रू, आई विल एग्री। पैसेंजर वाइज थोड़ा सा लो फील, आई हैव टू come take my head up and see, but that's it. I think you can increase the height of that seat also on the Taigun. Oh, is it? Yeah. Okay. नहीं है? Oh, unfortunately not there. Time for the audio system test. सबसे पहले हमारे पास है Hyundai Creta. This gets a new 10.25 inch screen over here. इसमें आपको Bose के speakers मिल जाते हैं, front central speaker, subwoofer at the back, 2 tweeters, 4 speakers. Sound quality कैसी है? चलो देखते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sound quality is amazing on the Hyundai Creta, one of the best in the segment, and I'm sure the same is the case with the Kia Seltos because उसमें भी same audio system आपको मिल जाता है. Amazing sound quality, yes, very nice. Time for the audio system test with the Hyryder. It gets a big screen over here, 9 inch की screen मिल जाती है आपको, but this one gets 4 speakers and 2 tweeters, no subwoofer, no front central speaker. Quality कैसी है देख लेते हैं. साउंड क्वालिटी इज डिसेंट फॉर द काइंड ऑफ स्पीकर्स दैट दिस कार हैज. हाई वॉल्यूम पे भी आपको वैसे कोई मेजर इश्यू आएगा नहीं, नॉट एज क्रिस्टल क्लियर एज द क्रेटास, बट फिर भी डिसेंट है काफी. टाइम टू चेक आउट द ऑडियो सिस्टम ऑफ द Honda Elevate. नाउ यू गेट अ नाइस स्क्रीन ओवर हियर, काफी अच्छी क्लैरिटी है, बेटर देन द स्क्रीन ऑन द Honda City. एप्पल CarPlay कनेक्टेड है, यू गेट 4 स्पीकर्स, 4 tweeters, नो सबवूफर. गाना बजाते हैं. Good sound quality, better than the urban cruiser Hyryder, but not as great as the Hyundai Creta. मतलब बीच में कहा जाता है Hyryder और Creta के बीच में. अभी देखते हैं Taigun. Time to check out the audio system of the Volkswagen Taigun. Now यहाँ पे 10 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है, and the Taigun is the only car in the segment जिसमें आगे भी आपको Type C पोर्ट, सिर्फ Type C पोर्ट मिलता है, नॉर्मल USB नहीं मिलता. बाकी सब गाड़ी में you get the option of regular USB, and on the Creta and even the Seltos you get the option of Type C also at the front. So my phone is connected to Apple CarPlay. गाना बजाते हैं same. डिसेंट साउंड क्वालिटी, यू गेट 4 स्पीकर्स, 2 tweeters, पीछे ट्वीटर नहीं मिलता आपको, सबवूफर नहीं मिलता, फ्रंट सेंट्रल स्पीकर नहीं मिलता. साउंड क्वालिटी इज डिसेंट. तो अगर पूरे सेगमेंट की बात करूँ, सेल्टोस एंड द क्रेटा हैव द एग्जैक्ट सेम साउंड क्वालिटी, तो सेल्टोस का वापस टेस्ट नहीं करेंगे, बट एज फार एज द साउंड क्वालिटी गोज, क्रेटा एंड सेल्टोस कम एट द टॉप. उसके बाद आती है एलिवेट, फिर सिमिलर लेवल पे आ जाती है हाइराइडर एंड Volkswagen Taigun. टाइम टू चेक आउट द हेडलाइट्स ऑफ द Kia Seltos. पहले ये देखेंगे लो बीम, दिस इज द फॉग लाइट ऑन, दिस इज द हाई बीम ऑफ, फॉग लाइट ऑफ, एंड या वी आर डन. सो इसमें आपको सभी LED लाइट्स मिल जाती है, ऑफरिंग डिसेंट विजिबिलिटी. नाउ वी चेक आउट द लाइट्स ऑफ द Hyryder. इसमें फॉग लाइट्स नहीं मिलती, दिस इज द लो बीम, दिस इज द हाई बीम, LED लाइट्स ऑल अराउंड, स्लाइटली बेटर विजिबिलिटी वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कार. फॉग लैम्प्स आल्सो वुड हैव बीन हेल्पफुल इन दिस कार. टाइम टू चेक आउट द हेडलाइट्स ऑफ द Honda Elevate. लो बीम, फॉग लैम्प्स, हाई बीम, ये सब आपको मिल जाता है. इसमें डिसेंट विजिबिलिटी मिल जाती है, बेटर देन Hyryder ओवर हियर, एंड जो गाड़ी की लाइट्स की थ्रो है वो भी काफी अच्छी है. नाउ इट इज टाइम टू चेक आउट द Taigun. इसमें आपको हैलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं एंड LED लो बीम एंड हाई बीम. सो यू कैन हैव अ लुक एट द लो बीम ओवर हियर, हाई बीम फॉग लैम्प ऑन कर लिया हम लोग ने, एंड नाउ वील स्विच ऑफ द हाई बीम एंड द फॉग लैम्प्स एंड सी द विजिबिलिटी विद द लो बीम. तो इसमें आपको फॉग लैम्प्स काफी यूजफुल मिल जाते हैं, ओनली कार इन द सेगमेंट टू गेट हैलोजन फॉग लैम्प्स. Finally, we have the Hyundai Creta with us. इसमें भी fog lamps नहीं मिलते. This is the low beam, this is the high beam. You get powerful LEDs, but again, fog lamps would have been a little more helpful. But otherwise, the throw of the lights is quite nice. High beam तो बहुत powerful है इसका. So finally, we are at the verdict of the video. कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है.
we'll start off from the Honda Elevate, which is the most value for money car in the entire segment. इसके टॉप एंड वेरिएंट के प्राइस में आपको ये सब गाड़ी की सिर्फ मिड वेरिएंट मिलेगी. Of course, the Elevate has lesser features, but it scores high on the fundamentals. अच्छा इंजन मिलता है, अच्छी स्पेस मिलती है, अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, Honda की रिलायबिलिटी और सर्विस मिल जाती है, एंड इट इज अ परफेक्ट नो नॉनसेंस कार. अभी आते हैं थोड़ी फैंसी गाड़ी पे, which is the Kia Seltos facelift. This and the Creta have the most number of features and engine options in the entire segment. Seltos is one of the best looking cars in the segment. इसमें आपको अच्छी स्पेस मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छा टेक मिल जाता है, nice engine options, something for every kind of customer. But the top end variants are little expensive, 24 lakh on road मुंबई तक इसकी top end variant जाती है. But if I had the money, I would probably buy this car. Coming to the Taigun, this and the Skoda Kushaq are the most fun to drive cars in the entire segment. The 1.5 liter TSI engine on this, even though it makes 10 horsepower lesser than the Creta and the Seltos' 1.5 turbo engine, this is actually more punchier, more fun to drive, more responsive, and the DSG on this is also better than the DCT on the Seltos and the Creta. This and the Kushaq are also the only cars in the segment to get a 5-star global NCAP safety rating. The Taigun has nice build quality. थोड़ी चीज़ें better हो सकती थी. It could get some more features and it needs a facelift I think now. But I think overall it's a very sorted car, and this is also one of my personal favorites over here. This and the Kushaq of course दोनों, and चलाने में बहुत मज़ा आता है ये गाड़ी. Coming to the Creta, the newest kid on the block, and of course one of the highest selling cars in the segment. ये गाड़ी मतलब it just caters very rightly to all the Indian audiences. MP engine मिलता है, turbo engine मिलता है, diesel मिल जाता है, manual, automatic सब चीज़ें मिल जाती है, and the Creta is a very popular household name because of its long-term brand value that it carries right from the first generation of the model, which came out in 2015. Hyundai की sales and service बहुत अच्छी है गाड़ी. You cannot really go wrong with the Creta. स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, ये सब मामले में क्रेटा काफ़ी अच्छी स्कोर करती है. बट इन टर्म्स ऑफ प्योर डिज़ाइन द किया सेल्टोस लुक्स बेटर. इवन द इंटीरियर इज अ लिटिल बेटर ऑन द किया सेल्टोस, बट ओवरऑल द क्रेटा इज समथिंग विच आई हाईली रिकमेंड. एंड नाउ कमिंग टू द अर्बन क्रूजर हाईराइडर, ये थोड़ी स्टैंड आउट होती है पूरे सेगमेंट में बिकॉज दिस इज द ओनली कार इन द एंटायर सेगमेंट अलॉन्ग विद द ग्रैंड विटारा टू गेट ऑल व्हील ड्राइव एज एन ऑप्शन. इसमें आपको पेट्रोल मिलता है, हाइब्रिड मिल जाता है, एंड इसमें आपको डीजल नहीं मिलता, टर्बो पेट्रोल नहीं मिलता. नाउ द हाईराइडर एंड द ग्रैंड विटारा आर फॉर पीपल हु वांट अगेन समथिंग विच इज नो नॉनसेंस जस्ट लाइक द होंडा एलिवेट, लेकिन इसमें आपको थोड़ी फैंसी चीज़ें नहीं मिलती. And that fancy appeal, the premium appeal is missing on the Hyryder and the Grand Vitara. तो वहाँ पे दोनों companies Suzuki and Toyota need to work over there and गाड़ी को थोड़ा और appealing, थोड़ा more premium बना सकते हैं. But otherwise, even these two cars, the Vitara and the Hyryder, are very fundamentally sorted. So now it is actually very difficult to pick a clear winner out of these because all of them offer different USPs. सब अलग-अलग type के customers के लिए आपको अलग-अलग चीज़ें मिल जाती है. So something is efficient, something is tech loaded, something has a lot of engine options, something is fun to drive, something is fancy, and something over there is no nonsense. तो ये हो गया comparison Creta versus Hyryder versus Taigun versus Elevate versus Seltos का. Which car is your favorite out of these? Let me know in the comment section below.